Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Bank Nifty and Nifty. Before starting, we will definitely cover in detail about today's price action. For those of you who keep complaining, ma'am, please cover it in English or please cover it in Hindi. I have already covered in both the languages, and let's understand we have to grow from this level. We have to stop fighting on the language issues and we have to seriously focus on some price action. I any which ways cover in both the languages. Still, if you do not have patience to go and check it, then it's up to you. Anyways, let's get started. First of all, I want to explain on the daily time frame. Yesterday, what we had discussed is, in case of a daily time frame, this was the earlier support which became the resistance, and post the breakout, whenever the market is going to come to this level, we are going to see some sort of a support at this level. The level that I was talking about was 46,900 to 47,200. You can go and check to yesterday's video. I have mentioned this. And what a price action today. The moment it touched it, we saw a sharp pullback from this level. So does that mean I have made money? No, I have lost money. However, I was lucky enough to not lose a bigger chunk. That was the reason I didn't short it when prices touched here. I definitely did go long because this was the zone when this particular level where we saw a sharp up move, and also there was a W formation. If you see this here, and it was near some supports which was also a previous week low, and so on and so forth. However, the prices immediately touched, and this I had mentioned in yesterday's level also as R1. The moment it tried to go up a bit and then immediately come down, and the moment the prices touched here, we saw a immediate bounce from the supports. For those of you who do not understand what support and resistance is, please go and check my support and resistance video, where I have mentioned if the support is so strong, we will see a tennis ball reaction, and this is exactly what happened today. For tomorrow, what we are expecting, now I am not considering this as the immediate resistance for now. I'll just delete this. For now, this one is the R1. Now see, this level has been tested quite some times, so this won't be an S1, but this is a good support now, which is somewhere around 47,000 to 46,760. This is a good support. However, another level that we need to look for, this particular trend line. Why? Because this trend line has also been tested thrice now. So let's say if at all we open, because of US, and tonight we have inflation data, and because of that, if at all US closes on a positive note, and tomorrow if we open with the gap up and the gap up gets sustained, and if we see some sort of price action consolidation here, a small range, and then we try to break out, then I would definitely like to go long. However, overall, what I'm expecting, if at all we open flattish or within this particular zone of 47,420 to 47,133, then I am expecting a triangle kind of a day. That's it. Then I am not expecting, because see, the major moves where the SLs of sellers and the the call writers as well as the put writers was taken out today itself. So then I'm expecting some sort of a calm expiry tomorrow, because today was more than enough to kick out all the sellers on both sides. So that's the reason I'm expecting triangle kind of a day. However, for that we have to open within this particular range. However, if we open slightly gap up and then tightly consolidate, very tightly consolidate here, and then we give a up breakout, remember, I'll play for this trend line breakout. If at all for some reason we open with a gap down, then all these levels will act as a resistance. If at all if opens gap down and tries to come down, I'll look here for some bullish reversal. Now I don't know, it will wait and make a reversal, or it will just this within just a single candle it will just bounce back. So we'll have to be very careful. So whatever it is, please do trail your profits tightly. Please do keep your SLs on this in this particular system. This environment, especially days like today, will definitely give you a perspective on how tight your risk management should be. If you have not lost more than 0.5% of your capital, you're good to go. So that's about it. The rest of the level remains the same, and today I'll post the
charts on Twitter as well. Yesterday I couldn't post it, and today morning I had some technical issues as well on my end. So I'll be posting this today evening. Now let's quickly go and understand Nifty charts. Again, if you guys remember, yesterday I had mentioned this is a very strong support zone, which is an immediate support. And I had also drawn this particular trend line where markets had taken resistance, then a breakout, and then it gave a retest and then came, and then again it tried to go down a bit, but then immediately it took support of this particular immediate support. Obviously I haven't imagined or prepared for this kind of a sharp up move the moment it touches the support. It actually didn't give any time. When this candle was forming, immediately the put spiked, and the moment it recovered, the calls again spiked. Luckily I didn't short calls. However, I had to take SLs on my put sells. Again, just like Bank Nifty, again the levels actually perfectly worked, like the immediate support and the immediate resistance. Just that I was working with I was playing in Bank Nifty. I actually saw a W and I went long. However, that got backfired totally. And now again, just like Bank Nifty, here also we can see some sort of a trend line which has been tested thrice, just like Bank Nifty. Tomorrow, easier thing is, let's say now this level has been tested quite many times. If at all we open flat and we try to break this particular low, then I am expecting market to touch to this level 2200 zones, which is a good support, and then we might see some sort of a reversal. However, if we open flat and for some reason market tries to break out on the upside, although in flattish I would actually prefer market breaking down on the lower side, because people who are carrying shorts, they will actually not see any profits in their overnight position. So likely they would like to hold this particular position. In case of a gap up, which would be around 360, I would wait for market to break 400 levels and sustain above it with a very good candle. Only then I will try to go long in case of Nifty. In case of a gap down around 2280 levels, what we will try to do, let the market go down a bit, and if at all we find some sort of a bullish reversal pattern in this particular zone, and after the confirmation I would like to go long. So these are the three scenarios that we have discussed in Nifty. So today we know we have US inflation data coming at around 6 o'clock. So we will definitely see the price action, and tomorrow we will see where the market opens, and accordingly we'll play our Bank Nifty expiry. We will just discuss Fin Nifty, what had happened. After the first candle, which definitely broke the previous day low, we saw an immediate and a sharp reversal which almost broke yesterday's high. Okay, and calls definitely spike like anything. So people who were playing non-directional, what they would tend to do is they would definitely try to roll up their puts. The moment they did that, they had to face this kind of a down move on their portfolio, like in their trading accounts. So that's the reason I'm saying just be very careful. And yesterday also I actually mentioned that I won't be surprised if Fin Nifty makes this kind of a move, right? And we definitely saw that twice at least, because in the morning it broke the day low and then made a high. Then it came all the way down to 2650 and again made a sharp up move. If you are trading Fin Nifty expiries, I would definitely, and if you're new to the market, if you're experienced, then I'm pretty sure you would manage everything on your own. But if you're new, just try to avoid Fin Nifty expiries. It's actually not worth the risk reward. So that's about it. Now for our Hindi audience, जो लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारी एक्सपायरी के लिए क्या रणनीति है। जैसे कि आज हमारे पास जो दिन का रेंज था वो काफी बड़ा था। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिन का जो रेंज है, आज के जो दिन का रेंज है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के पास में था। तो कल हम क्या एक्सपेक्ट करें, जब भी ऐसी इतनी बड़ी रेंज हो जाती है और दोनों साइड की मूवमेंट बहुत शार्प होती है, ये ऊपर भी गई और नीचे भी गई, तो ये साफ बता रही है कि दोनों कॉल और पुट राइटर्स के एसएल्स लिए गए होंगे। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा शांत होना चाहेगा, मतलब साइडवेज एक्शन होगा। अगर कल आज कोई इवेंट नहीं होता, मतलब आज जो यूएस में इन्फ्लेशन डेटा है अगर नहीं होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी सिंपल टू सेल स्ट्रैंगल्स एंड गो। बट क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन डेटा है और हमने यूजुअली पास्ट में भी देखा है, ये कुछ बहुत बड़े रिएक्शंस देता है यूएस,
तो मान लो अगर कोई हम बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन से ओपन होते हैं तब क्या करेंगे। लेट्स से हम कोई बड़े गैप अप से ओपन होते हैं ऑफ 47,500 वगैरह, तब हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की रेंज बनाए। क्यों ये जरूरी है? बिकॉज मार्केट इतनी वॉलेटाइल होने के बाद हमें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चाहिए। ऐसे अगर वो डायरेक्टली अगर ऐसे अप मूव होगा तो ऐसे ही टाइप का डाउन मूव होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन करे, एंड उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है तो आई विल गो लॉन्ग। ऑफ कोर्स अगर आप वैसे देखोगे तो डेफिनेटली ये लेवल के ऊपर होना चाहिए 47,700 और 800 के ऊपर, बट मैं अगर ये ब्रेकआउट को भी प्ले करूंगी, मैं ये लेवल तक प्ले करूंगी और फिर यहाँ पर आई विल टाइटली बुक आउट, या तो फिर टाइटली ट्रेल करूंगी या तो बुक आउट करूंगी और वेट करूंगी। ये फिर यहाँ पर कोई रेंज बना के ब्रेक करेगी नहीं, बिकॉज यहाँ से जो सेलर ने जो शार्प डाउन मूव दी है, मुझे ये लेवल पे थोड़ा सा अब कॉशियस रहना है। तो कल के लिए मैं ऐसे प्लान करूंगी अगर ये ऐसा होता है तो प्ले आउट। अब लेकर चलते हैं कि अगर कोई गैप डाउन से ओपन हो रहे हैं, मान लीजिए कि वहां का इन्फ्लेशन डेटा या बहुत खराब आ जाता है और उसके कारण हम कोई बड़े गैप डाउन से खुल जाते हैं। अगर गैप डाउन से भी अगर हम खुलेंगे तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा बेरिश प्ले करूंगी, बट ये लेवल तक, जैसे कि आज के लो मान लीजिएगा, या क्योंकि ये पूरा सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो फिर उसके बाद यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा, फिर मैं रिवर्सल के लिए प्ले करूंगी। बट हाँ, उसमें कॉल सेल करने के बाद जैसे स्पाइक्स है वो आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि क्या आज जैसे मूव हुआ, जैसे ही उसने टच किया सपोर्ट, उस वहां से ये इमीडिएटली इसने पुल बैक दे दिया शार्प वाला। आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि कल भी मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था कि ये वाली जो जोन है, हमने कहा था कि ये 46,900 से 47,200 बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल प्राइस एक्शन ने उसको रेस्पेक्ट किया है। तो आप लोगों ने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिएगा, तो आपको इसकी रीजनिंग अपने आप से भी समझ में आएगी कि क्यों मार्केट ने वहां से शार्प रिएक्शन दी है। अब चलते हैं कि मान के चलते कि अगर हम फ्लैट ओपन होंगे किसी भी कारण से, तो फिर मैं ट्रायंगल प्ले आउट करना प्रेफर करूंगी, बस दैट्स इट। इससे मतलब इससे आसान नहीं हो सकता अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो, बिकॉज आज देखिए आज दोनों लोगों की एसएल्स ले गई है, तो फिर कल मार्केट थोड़ा सा शांत होने के चांसेस है। ऑफ कोर्स मैं छोटे छोटे स्पाइक्स की बातें नहीं करूंगी, वो तो नॉर्मल स्पाइक्स में आजकल आने लग गया है, बट ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल रिमेन थोड़ा सा साइडवेज विद स्मॉलर स्पाइक्स विच आर इजियर टू मैनेज। आज वाली स्पाइक तो मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो ये रही बैंक निफ्टी के लिए। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट वैसे तो कर रही हूँ ये पर्टिकुलर जोन से लेके ये पर्टिकुलर जोन, अब देखना पड़ेगा हम कहाँ ओपन होते हैं, और कल किसी कारणवश अगर हमने ये लेवल क्रॉस कर दिया फिर हम नए हाइस के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब चल के देखते हैं हम निफ्टी। तो निफ्टी ने तो आज क्लोजिंग बिल्कुल कल की जैसे ही दी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं। और अगर आप डेली में देखोगे तो ये जैसे कि कल बहुत बेरिश कैंडल थी और आज लॉन्ग रेंज वाली डे है, कल भी लॉन्ग रेंज की थी, आज भी लॉन्ग रेंज की, जस्ट दैट आज जहां पर खुली मार्केट ने इतना सब हल्ला मचाने के बाद वहीं पर क्लोज हुई है। तो कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग बिल्कुल यहीं पर ही है। इनफैक्ट पिछले थोड़े दिनों से मार्केट इसके ऊपर ही रह रही है, मतलब 300 के ऊपर की क्लोजिंग दे पा रही है। अब हम देखते हैं 15 मिनट्स में। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मार्केट ने जैसे ही वो लेवल पे पहुंचा वापस उसने भी इमीडिएटली बाउंस बैक दिखाई। अब कल के लिए हम क्या करते हैं, कल लेट्स से अगर हम कोई भी रीजन से अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, जो कि इजीली नहीं लग रहा है, तो फिर से हम स्ट्रैंगल खेलेंगे जैसे हमने बैंक निफ्टी में कहा है। बट फॉर सम रीजन कल हम कोई मेगा गैप अप मूव से ओपन होते हैं तो हम वेट करेंगे मार्केट को इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के लिए, और जैसे ही कंसोलिडेशन करके अगर वो ब्रेकआउट देती है तो हम ब्रेकआउट को प्ले करेंगे, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस 3 बार टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ तक प्ले करेंगे हम? 22,400 लेवल्स तक प्ले करेंगे, ठीक है। और मान लीजिएगा कि कल हम कोई बड़े गैप डाउन से ओपन होते हैं तो पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या उसका प्राइस एक्शन है। अगर इसके भी नीचे ओपन हो जाता है तो पहले उसको थोड़ा सा नीचे जाने देंगे, फिर इसके आसपास में भी 22,240 से लेके 22,200 के आसपास हम वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई सपोर्ट्स फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर हम लॉन्ग जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। मैं आप लोगों से जो लोग नए ट्रेड करते हैं और जो लोग हर एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगी कि फिन निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बिकॉज इसको ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। स्पेशली ऑप्शन सेलर्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज
इसके प्रीमियम्स जो है वो बहुत कम होते हैं और ऐसे वाली मूव्स आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो। मान लीजिएगा आप अगर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो आज, फॉर दैट मैटर डायरेक्शनल वाले के लिए भी इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही अप मूव हुआ, आप वेट करने से पहले, मतलब ट्रेल करने से पहले तो ये पूरा डाउन मूव आ गया था। इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज दिस काइंड ऑफ अ मूव इन फिन निफ्टी। तो हालांकि जितना मुझे लगता है कि अगर फिन निफ्टी में नॉन डायरेक्शनल वाले ने ट्रेड किया होगा तो लॉसेस डेफिनेटली किए होंगे, और आज के दिन अगर आपके लॉसेस 0.5% के अंडर है तो वेरी गुड। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। इनफैक्ट आई वुड से ऐसे वाले एनवायरनमेंट में आपको और भी इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो पर डे की जो ट्रेडिंग रिस्क है वो इवन 0.5 से भी कम आनी चाहिए। ठीक है, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ अच्छा इससे सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या हमारी एनालिसिस आपको हेल्प कर रही है, और ये भी बताइएगा कि आपको आने वाले दिनों में मुझसे कौन सी एनालिसिस या मुझसे कौन सी सेटअप को सीखना है, या कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है। जल्द ही मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।